Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. Good Okay. afternoon. Please switch on your cameras and then we will. Switch on your cameras. Anshika, Disha, Sandhya, Ayan Ali, Anshika Yadav. Yes, ma'am. Okay. So let's get started. Okay. Ayan, your video is still off. Switch it on. Let's get started. Okay. In an AP, if the common difference is equal to -4, the seventh term is 4 and the seventh term is 4. Then find the first term. So 28. How did we do that? सेवन टर्म क्या होगा? D दे रखा है 4. A7 को हम A + 6D लिख देंगे और फिर D की वैल्यू पुट कर देंगे. Very good. So A plus 6, which is -24, right, is equal to 4. So A जो है is equal to 28, which is the first term. A is same as A1. Okay. Yes. Okay, let's do this. The sum of 4 consecutive numbers in an AP is 32, and the ratio of the product of the first and the last term to the product of the two middle terms is 7:15. Okay, find the numbers. How will we do this? Okay, so it doesn't matter from where the series starts, right? So we can take the terms as A plus D, A plus 2D, and A plus 3D. These are our terms, right? And the sum is given. So the sum is 4A plus 6D, right? So 4A plus 6D is equal to 32. Right? Understood? Now the product of the first and the last term का रेशियो दिया गया है, तो फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म, सो A plus 3. Good afternoon, sir. Good afternoon. Okay, by A plus D, A plus 2D is equal to 7/15, right? And we will do the cross multiplication and we can solve this, right? So हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगे. अब इसको करने का, ये तो इस तरीके से तो हम कर ही सकते हैं. दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड.
Can we make some change in this method to make our calculations easier? सर a प्लस 3d की जगह 16 लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? 16. 16. No, I didn't get that. Why can we write 16? Sir, I am saying that instead of a plus 3d, we can write 16 also, because by the equation of 4a plus 6d equals to 32. If we choose, अच्छा. if we तो take उसको common, 2 से डिवाइड कर देंगे, आप ये बोल रहे हैं, राइट? yes, sir. हाँ, all you are saying is 2a plus 3d is equal to 16 लिख देंगे. ठीक है. तो अब होगा क्या कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे, we will also have a d square term, right? And we will also have a there. So थोड़ा सा एलिमिनेशन में हमें समय लगेगा, राइट? इस तरह के क्वेश्चन को करने में ना हम कई बार एक ट्रिक और यूज कर लेते हैं. हम ये भी यूज कर लेते हैं क्योंकि ये इवन नंबर्स हैं, राइट? सो व्हाट वी कैन टेक इज कि एक जो बीच के टर्म्स हैं, मान लीजिए, ठीक है, हम ये कहते हैं कि जो बीच के टर्म है वो होता है a माइनस let's say x and a plus x. ये बीच के दो टर्म्स हैं, राइट? तो कितना d हो गया हमारा? d का वैल्यू 2x हो गया. तो पहला टर्म क्या होगा? a माइनस 3x और लास्ट टर्म क्या होगा? a प्लस 4x. तो a प्लस 3x. No, sir, a plus 3x ही होगा. a प्लस 3x, राइट? अब क्या ये भी ठीक है, लेकिन हमें पता है d इज इक्वल टू 2x है यहाँ पे, राइट? अब अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो इनका सम क्या बन जाएगा? सम बन जाएगा 4a is equal to 32. So we will get a is equal to 8 immediately, right? और जब हम ये वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे तो उसमें केवल एक ही वेरिएबल होगा जो x होगा. And Good afternoon, sir. Good afternoon. And we won't have to solve any simultaneous equations. ठीक है? तो ये एक अच्छा मेथड है, इसको समझने की कोशिश करिए. ये तो आप कर ही सकते हैं. ओके? सो अब हमारे को a इज इक्वल टू 8 आ गया. अब हम ये वाला एक्सप्रेशन लिख देंगे, a माइनस 3x इंटू a प्लस 3x by a minus x, a plus x is equal to 7 by 15. Now this a की वैल्यू हमें 8 पता है, लेकिन उससे पहले what will we do here, right? यहाँ पे भी आइडेंटिटी यूज हो जाएगी. So a स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? And a is 8, so 64 minus 9x स्क्वायर. और नीचे क्या हो जाएगा? a square which is 64 minus x square is equal to 7 by 50. Okay, 15 into 64 minus 9 into 15 x square is equal to 7 into 64 minus 7x square. Okay, so we take this on this side and we will be left with 8 into 64 is equal to 9
This is Nishant nine, Tiwari, Shekhar, switch on your camera. mm, Ayan. 9 into 15 x square. 7. Okay. So this is 135 minus 7 is 128. 128 x square. Okay. So x square is equal to 4. X is equal to plus minus 2. Okay. So D is equal to, or we don't even have to find D. We just take any value, either plus or minus. Anyway, the numbers will be the same, right? They will just come in reverse order. Okay. So we go and put the value of plus 2. So this number will become 2. This will become 6. This will become 10 and 14. हम -2 डालेंगे तो this will become 14, 10, 6, right? So both the sequences are the answer. Okay, understood? So ये method कई बार आपके calculations को at least 2 times faster कर देगा. Okay, although not useful in all questions, useful in only certain type of questions. मम्मी शारदा मासी बबीता मासी वीडियो कॉल आ रही कर ली बात. Himanshu, keep yourself on mute. Okay, what is the common difference of an AP in which there is a relationship given? सर इसमें हम A21 को लिख देंगे A+20D एंड सिमिलरली A7 को A+60 एंड देन वो A एलिमिनेट होके D की वैल्यू आ जाएगी. Very good. एकदम straightforward question है. Like this. Okay, so A will get eliminated and we will have 14D is equal to 84 and D is equal to 84 by 14, which is 6. Okay. Yeah, let's do this. Which term of the progression, there's a progression given which is reducing by 3/4 every time, right? It's reducing by 3/4. Is the first negative term. How will we find that? A plus n minus 1 into D is greater than 0. से फॉर्मूले से निकालेंगे. Very good. ठीक है, तो A जो है A is equal to 20 and D is equal to -3/4. Right? Now we will say nth term is equal to 20 plus n minus 1 D. Now this should be just greater than 0. Okay, so 20 plus n minus, we can say here, n minus 1, 3/4. It's equal to 20 plus 3/4 minus 3/4 and 0. So it means 20 plus 3/4. Okay, and this is 83/4. Tinku Sharma, sit properly. It's less than 83/3, which is 3 is 20. Arpan Sharma, switch on your camera. 27 point.
So 27.7. right? 27.6, right? 27.67. So n has to be less than this for this to happen. The largest value of n comes out to be 27, right? Because n has to be integral. So n का जो largest value है वो 27 है. So why we have put a negative sign? Where? So 20 minus bracket n minus 1, 3 by 4. So in the second line. This one. Okay, we have to find the first negative term actually. I'm sorry. So it has to be less than. We have to find the first negative term, right? So all the signs had to be opposite, right? So then it means n has to be greater than 27.67. So the smallest such value of n will be 28th. So 28th term will be the negative term, right? Yes, sir. So 28th term is the negative term. Okay, so I was actually doing with which is the smallest positive term. That is why that was running in my mind. That's why I wrote the opposite sign. Okay. Then the answer would have been 27th, but this is correct now. Thanks for pointing that out. The first term of an AP is 5. The last term is 45. And the sum of all its terms is 400. What is the number of terms and the common difference of the AP? सर इसमें सम वाला फॉर्मूला लगा के निकाल करके हो जाएगा. कैसे? SN is equal कौन सा to लगाएंगे फॉर्मूला? A plus n/2 first term plus last term. n/2 and a plus l, right? n is equals to 60. Is equal to the sum, and the sum is 400. right? So n/2, a is 5, so this is 50, right? So n is equal to 400 by 25, which is 16. Okay, now we have to find the number of terms, which is 16, and common difference of the AP. What is the तो common सर एक difference? वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे an is equal to a plus n minus 1 into b. Yes. Okay. So a plus n minus 1 into d is equal to 45. Right. So a is 5 and this is 15. Right. So d is equal to d is equal to 40 by 50. 15. 8/3. Yes. Okay. If the ratio of the sum of the first n terms of two APs is 7n plus 1 is to 4n plus 27, then find the ratio of their ninth terms. सर इसमें हम n/2 into 2a plus n minus 1 into b अपॉन सेकंड के वाले ठीक है ना, तो हमारे पास दो एपीज हैं, है ना, दो एपी हैं हमारे पास. तो क्या है वो एपीज? पहला एपी जो है वो है मान लीजिए A1 फर्स्ट टर्म और D1 डिफरेंसेस, और दूसरा जो है A2 और D2 डिफरेंसेस, राइट? तो हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बनेगा? द
ratio of sum of the first n terms. What is the ratio of the sum of n terms? क्या फॉर्मूला होता है? n by 2 in n the by 2 bracket 2a to a plus n minus 1d, d bracket. right? सो इनकी हमें रेशियो लिखनी है। तो अब n by 2 तो कैंसिल हो जाएंगे, राइट? तो 2a1 प्लस n minus 1 d1, 2a2 plus n minus 1 d2 is equal to 7n plus 1, 4n plus 27, right? Find the ratio of their ninth terms, right? Ninth terms की ratios क्या होंगी? नाइन्थ टर्म्स क्या होंगे? इसके पहले केवल टर्म्स लिख लेते हैं हम। तो टर्म्स की रेशियो क्या है? टर्म्स की रेशियो है a1 प्लस n माइनस 1 d1 बाय a2 प्लस n माइनस 1 d2, right? Now what will we do? इसमें शायद हमें नाइन्थ टर्म के रेशियो पूछे हुए हैं, तो n की वैल्यू 10 पुट करके रखेंगे। नहीं, n की वैल्यू 9 रखेंगे ना, नाइन्थ टर्म है तो 8d1 आ गया। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है, राइट? एक हमारे पास ये इक्वेशन है, मतलब ये इक्वेशन नहीं है, ये हमें निकालना है। दिस वी हैव टू फाइंड, वी नो दिस। हाउ विल वी फाइंड दिस? बताइए। How will we proceed now? हमें ये वैल्यू निकालना है। Any ideas? देखिए ये गिवन है, राइट? ये गिवन है। लेट मी राइट वन मोर थिंग, दिस इज ट्रू फॉर ऑल n। ये हमेशा सच है, राइट? ऐसा दिया गया है, तो हम उसको यूज करके ये चीज निकाल सकते हैं। देखिए
हमको ये चीज निकालनी है। हम ये करते हैं कि ये वाला जो रेशो है ना, इसको ऊपर नीचे 2 से डिवाइड करके देखिए क्या लिख सकते हैं। रेशो वोंट चेंज इफ वी डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, राइट? तो दिस कैन बी रिटन एज a1 plus n minus 1 by 2 d1 by a2 plus n minus 1 by 2 d2, है ना, which is equal to 7n plus 1 by 4n plus 27, राइट? हमें ये चीज लानी है। ये n की कोई ऐसी वैल्यू अगर हम डालें कि ये मिल जाए हमें, तो वी कैन पुट n एवरीवेयर एंड फाइंड, राइट? देखिए, इसका मतलब a1 तो a1 ही है, a2 तो a2 ही है, राइट? लेकिन हमें यहाँ पे 8 है, यहाँ पे n minus 1 by 2 है। सो अगर मैं n minus 1 by 2 को 8 के इक्वल रख के देखूं, then n is equal to 17, right? 16 plus 1. सो अब ये जो इक्वेशन है मेरे पास, दिस इज ऑलवेज ट्रू, राइट? ये कोई कंडीशनल इक्वेशन तो नहीं है। सो इट विल बी ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n, right? So I can also put the value of n as 17 here. So let's do that. We will get n a1 plus 17 minus 1 by 2 is equal to 8 d1 by a2 plus 8 d2. यही हमें कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे हम n की क्या वैल्यू डाल रहे हैं? 17 डाल रहे हैं। तो 7 into 17 plus 1 by 4 into 17 plus 26. Okay, so this 49 plus 150, 50 plus 70, 120. Okay, and this is so 60 plus 95. Okay, so 120 by 95. Excuse me, sir. Hmm? Sir, can you please repeat the process you have done after that? जो आपने n minus 1 by 2 लिखा है वो समझ नहीं आया। ये वाला पार्ट ना? Yes, sir. Okay, okay, let me make some space. Let me just give me a minute. Okay, so I made some space. Now see, we had this equation, right? ये तो हमारे लिए true always है, right? So what was this equation? 2a1 plus n minus 1d by 2a2 plus n minus 1, sorry, d2. इसकी वैल्यू हमें पता है, ये हमेशा सच है, always true, right? We have to find the value of this ratio, right? So हमें क्या ढूंढना है? a1 plus 8 d1 by a2 plus 8 d2. This we have to find, right? Now the question is कि अगर मैं इस रेशो को जो हमेशा सच है, I am just trying to get the 2 out, right? So I will divide it by 2. So 2 यहां से चला गया, यहां आ गया, यहां से चला गया, यहां आया, राइट? ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दिया है। अंडरस्टूड? तो अब देखिए, मुझे ये ढूंढना है। अब इसको कैसे किया उससे पहले ये समझिए कि अगर मैं n की वैल्यू 17 डाल दूं तो ये चीज क्या बन जाएगी?
तो ये A A1 plus प्लस 8D1 हो जाएगा, नीचे A2 प्लस 8D2 हो जाएगा ना। और वो कब होता है? वो तब होता है जब n 17 होता है, राइट। वो मैंने कैसे किया? मैंने कहा कि n-1/2 की जगह 8 चाहता हूं मैं, तो 8 लिख लिया, तो n इज इक्वल टू 17 मिल गया मुझे। यानी कि मैंने अब इस इक्वेशन में जो हमेशा सच है, so this is more rather than being an equation, it's like an identity, right? Within the scope of this question, this is an identity. इसीलिए मैंने ये अलग से लिख रहा हूं कि this is always true in this question, right? इससे हम n की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, दिस इज ऑलवेज ट्रू। ऐसी चीज को, ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी बोलते हैं, राइट। तो ये एक आइडेंटिटी है, ये हर एक n के लिए ट्रू है। इट इज ट्रू फॉर 1 2 3, इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 17। तो मैं n इज इक्वल टू 17 डाल दूंगा, तो यहाँ पे भी n इज इक्वल टू 17 डालूंगा, जिससे मुझे ये आंसर मिल जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? Yes, sir. Okay, so compared to the normal AP questions, this is a relatively a trick type of a question, right? ये हम केवल फॉर्मूला लगा के जो हमेशा क्वेश्चन कर पाते हैं एपी में, ये उस कैटेगरी का क्वेश्चन नहीं है। Okay, and it's not like it's coming from a trick book or something. This question has appeared in the board. ओके तो कभी कभी रेयर होता है, ऐसा नहीं कि हर साल ऐसा क्वेश्चन आता है, बट वंस इन अ वाइल इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में। आई जस्ट वांटेड टू शो यू कि समटाइम्स ट्रिकी क्वेश्चंस डू कम इन द बोर्ड एग्जाम। ओके, What is the final answer of this question? the final answer we just did, right? 120 by 95. Obviously we can divide by 5 at least, so we will have 24 and yeah, 24 by 19. Okay, sir. Okay, so तनवीर माइक अपना ऑफ कीजिए। ठीक है, तो these were the AP questions. So the questions I have been doing with you have appeared in the board exams between 2015 to 2018. Okay, मैंने 2019-20 के questions deliberately नहीं कर रहा हूं अभी, because you can do those as complete papers as your own practice. Okay, क्योंकि मैं क्लास में कर लूंगा, then you know you won't be able to use them as complete papers for practice. Okay. A plane left 30 minutes late than its scheduled time, and in order to reach the destination 1500 kilometers away in time, it had to increase its speed by 100 kilometers per hour from the usual speed. What is the usual speed of the plane? How will we do this? Okay, okay, let's try and do it. Yeah. सर पहले जो 100 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करेंगे। Actually, I would suggest don't do that. ठीक है, बिकॉज उससे मेरे हिसाब से वो ज्यादा मुश्किल होगा, राइट? क्योंकि आपको आंसर किलोमीटर पर आवर में निकालना है, ये भी किलोमीटर्स में है। तो ठीक सर है, लेकिन आवर को तो मिनट में चेंज करना पड़ेगा। हाँ, तो मिनट्स को आवर में चेंज कर लीजिए ना। 30 मिनट्स इज इक्वल टू 0.5 आवर, वो ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। यस। ओके,
No. Okay. So let's do that. इसको let the usual speed be, let usual x speed be x. ठीक है. So the time, normal time is equal to t. is equal to velocity, distance upon velocity, right? Distance upon speed. So 1500 है distance तो by speed. इतने hours लेता है ये, right? Normally. लेकिन उस दिन इसने the don't do that, less time taken. ओके क्या था उस दिन, क्या टाइम लिया उसने, डिस्टेंस तो पूरा ही कवर किया है, लेकिन लेकिन स्पीड जो है उसकी 100 किलोमीटर पर आवर ज्यादा थी उस दिन, राइट? तो x प्लस 100 थी स्पीड. अब ये नॉर्मल टाइम है, ये लेस टाइम है, तो नॉर्मल टाइम और लेस टाइम में क्या डिफरेंस है? नॉर्मल टाइम जो है माइनस 0.5 was the less time. Yes. Right? From this we will calculate the value of x. Okay. So let's do that. Okay. इसको मैं half लिख लेता हूँ, just so that I don't have to deal with decimals. Okay, and now let's do that. 3000 minus x upon 2x is equal to 1500 plus. Okay, so this will become I can't do any simplification. Okay, so 3000 x plus 3 lakh minus, sorry, x square. no, just a second. Minus x square minus 100x, right? It's equal to 3000. So 3000 x से 3000 x को कट कर दो. ये तो चला गया. So we are left with x square plus 100x plus 100 minus 3 lakh. 3 lakh. Okay, so now we have to divide three, find two factors of 3 lakh which differ by 100, right? So वो हो गए हमारे क्या 500 and 600, right? Yes. So Right, sir. so we will get x square plus 600x minus 500x minus 3 lakh. So we will get x is equal to 500 and minus 600. Obviously the speed cannot be negative. Okay. The speed is equal to 500 kilometer per hour. So speed, normal speed जो है usual, not normal, sorry. The word used is usual. Usual speed is equal to 500 kilometer per hour. Got that? Okay. Word problems may you always, when you find the answer, go back and read the question to check you have answered what was asked. Okay. So usual speed ही पूछी थी and वही हमने निकाल लिया, right? Okay, sir. Now we are not left with enough time. Okay.
Okay, sir. we won't be able to do this question. But this is a straightforward question, right? This is a straightforward question. Shiv, what is this? Sir, Shiv is there. He just started, I think, class. He just joined. I removed Shiv. Okay. I don't know why Shiv wants to create some disturbance every time. Okay. So we are coming to an end now, right? But this is a standard question, right? How do we do this question? सर इसमें मीडियन का फॉर्मूला लगाना है और तो उससे पहले फ्रीक्वेंसी भी नो सर हाँ, मीडियन का फॉर्मूला लगाने से पहले सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ता है, राइट? तो वो निकालते हैं। चलिए 49 ये हो जाएगा 182, राइट? एंड 245 and 260, 266 and 273, 277, 280. Okay, and 280 was the total number, so we did it right. Okay, अब कौन सी हमारी मीडियन क्लास है? मीडियन क्लास, हाँ, जहां पे 140 आ रहा है, राइट? तो 140 कहाँ पे आ रहा है? 10 to 15 वाली होगी। हाँ, तो ये जो है 140 यहाँ आ रहा है हमारा। तो our median class is 10 to 15. Always right. Median class 10 to 15. Right? तो क्योंकि you will get marks even for writing that, right? So वो आप जरूर लिखिए median class. अब फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का? मीडियन का फॉर्मूला लिखना है इसके बाद हमें। क्या होता है फॉर्मूला? L plus n upon 2 minus CF upon F. H. F, right? So into H. H is the class, right? So let's put these values. L is 10. N by 2, we just calculated with 140. Cumulative frequency of the previous one, which is 49. Which is 49. ये वाला cumulative frequency आएगा और frequency इसका आएगा 133. और class interval क्या है? 5. So that's all that we have to calculate. Okay. It will come in a decimal. Also, that's okay. 91 by 133 into 5. Okay. So that you can calculate and find, right? So that's it. Okay. Tomorrow we will do the carbon chapter. Okay. Okay, sir. Okay, then. Bye-bye. Thank you, sir. Thank you. Bye-bye.